I've listened to enough rubbish from you. We are all now part of Modi's nation. You have no business making a personal attack on any of my panelists. Look at this. It's all saffron. It was a fantastic speech. Thank you. There was a lot of humor. Is India's media facing a credibility crisis? Let's take a look. Welcome to the BBC News at 1. Hello, I'm Alice Baxter with BBC World News. You're watching BBC News at 9 with me, Carrie Gracie. The headlines. Es ist 18:45 Uhr, hier ist RTL aktuell und das sind unsere Themen heute. Hello, very good morning. Welcome to Breakfast with Dan Walker and Louise Minchin. Our headlines today. This is BBC News. I'm Anita McVeigh. The headlines at 8 o'clock. Hello there, welcome to Newsline. It's Thursday, August 23rd. I'm Catherine Kobayashi in Tokyo. Welcome to Arirang News. This is the late night edition. I'm Sean Lim. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. With Alistair Stewart. Good afternoon. The World Health Organization says it poses a greater global threat than terrorism. That's bad enough. But what the expert you're about to meet says is even more terrifying. Professor Gabriel Leung believes 60% of the world's population could become infected with the virus, and that as many as 45 million of us might be killed by it. Hundreds of British troops are being sent to West Africa. A small number of cases will reach the UK. We can contain it. Britain is at the forefront of preventing the spread. A message for the public. Don't worry. Calm. Measured. Now to India. नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आप देख रहे हैं टक्कर, देश का सर्वाधिक देखने जाने वाला प्राइम टाइम शो। बॉलीवुड फिल्म के एक गाने के बोल हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। एक बार फिर हाजिर हूं देश की बहस को लेकर, देश के इन कपड़ों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जंग छिड़ गई है। जी हां, अरे चौरसिया सुधर जा। तुम्हारा काम ही है एजाज खान। अरे तू भी सुधर जा, सुअर की शक्ल के। अरे ना ना, एजाज मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल बोलिए। पत्रकार हो, बोलिए की जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार हो, बोलिए। आंदोलन की परिभाषा जानते हैं। आप मार सकते हैं। आपको अगर लगता है मारने से आपको भगोड़ों से पैसा लेने वाले, भगोड़ों को भगाने वाले, आप पीटिए। आप तमाम बैंकों के घोटाले मैं तैयार हूं अंजना जी, अगर ये मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। Is it possible that your impulse to put a positive spin on things may be giving Americans a false sense of hope? No, I don't think so. Misrepresenting the preparedness right now. No, I don't think so. Sir, nearly 200. I'll spell out. John, nearly go 200 ahead. dead. What do you say the Americans were scared though? I guess nearly 200 dead, 14,000 who are sick, millions, as you witnessed, who are scared right now. What do you say to Americans who are watching you right now who are scared? It's surreal, but the news is fake. I guess I don't understand. It seems that there's a disconnect there. If the information coming from those leaks is real, then how can the stories be fake? No, the reporting is fake. And if I may ask, not just say it's a story I don't like. I do that. Call it fake news. No, I do you're that. undermining confidence in our news media. Here's the thing. Isn't Okay, that important? I understand. The caravan was not an invasion. It's a group of migrants moving up from Central America towards the border with the U.S. Thank you for telling me that. And why did you characterize it as such? You know what? Away. That's not an invasion. Honestly, you know what? Away. That's not an invasion. Honestly, I think you should let me run the country. You run CNN, right. And if you did it well, your ratings Let would me be ask, much better. if I may ask one other question, Mr. President. That's I was enough. going to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. Excuse President, me. That's enough. Mr. President, I had one other Peter, question, let's if go. I may ask, on the Russia investigation. Are you concerned that you may have? I'm not concerned about anything with you the may have Russian indictments coming investigation down? because it's a hoax. Are you? That's enough. Put down the mic. And you repeatedly said that Americans need to fear Democrats. You said it would unleash a wave of violent crime that endangers families everywhere. Why are you Because pitting they're very weak on Americans? crime. Why are Excuse you me. pitting? Why are Excuse you me. pitting Americans Peter. against one another, sir? Peter. Sir, does the Russian government have any compromising material on President Trump or his family?
many times that the US is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world. Respected Pradhan Mantri ji, you inspire our nation with your leadership. इसलिए प्रधानमंत्री जी, हमने भी ठान लिया है कि देश के बढ़ते हुए कदम के साथ साथ हमारा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क भी अपने कदम और भी तेज करेगा। मोदी जी 5 साल बाद मोबाइल पर फिर से मैसेज आ रहे हैं कि देश की उम्मीदों का नाम है मोदी और दुश्मनों की मौत का पैगाम है मोदी। ये आज बिहार से मुझे किसी ने भेजा। मोदी ने कर दिया ऐलान, कान खोलकर सुन लो इमरान, कहता सारा हिंदुस्तान अब नहीं बचेगा पाकिस्तान। सामान्य मानवीय की जो क्रिएटिविटी है उसको एंजॉय करता हूं। मोदी सरकार पार्ट 2 ने 56 इंच वाला हौसला दिखाते हुए ताबड़तोड़ कई फैसले किए। मोदी जी, सबसे पहले जानना चाहता हूं कि ये चुनाव मोदी वर्सेस मोदी हो गए हैं। पूरे देश के अंदर ये माहौल है कि आप ही डिस्कशन में हैं, आप ही चर्चा में। आलोचनाएं होती थी, लेकिन जिस तरह से आपको एकदम टारगेट पे लिया जाता है, बहुत एक्सट्रीम निजी हमले आपके ऊपर किए जाते हैं, तो इतनी नेगेटिविटी आपके लिए क्यों आपके विरोधियों में आ गई है? क्या मोदी उनको एक खतरा लगता है? सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? आपने रात्रि का जिक्र किया, नवरात्रि शुरू होने वाली है, बहुत सारी रैलियां हैं, आप इस बार भी व्रत रखेंगे? जी, वो मैं करीब 40-45 साल से करता हूं, तो मेरी कोशिश रहती है कि उसको निभाऊं। कठिन होता है, लेकिन ये नवरात्रि उतना कठिन नहीं होता है जितना मेरा सितंबर अक्टूबर वाला होता है। कुछ नहीं खाते हैं इन नवरात्रि में, पूरी तरह उपवास करते हैं? जी नहीं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि इसमें आपको कम थकान होती है? इसमें कुछ मतलब उसमें क्या ज्यादा कठिन तपस्या होती है, इसमें कम होती है व्रत की? पिछले 14 दिनों से कोरोना संक्रमण की खबर नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि बार बार हाथ जोड़कर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील कर रहे थे लॉकडाउन को सफल बनाने की, उसका रिजल्ट दिखने लगा है। लेकिन यही रिजल्ट पाने के लिए अमेरिका तरस गया है। अब सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया जो अमेरिका के उस सुपर पावर के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाए। हैरानी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि दोनों के पास संविधान के तहत वो शक्तियां थी कि वो कड़े फैसले ले लें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन शक्तियों का सदुपयोग किया और वही शक्तियां डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल नहीं कर पाए। आप क्या बनना चाहेंगे? राजनीति का शोले आप बनना चाहेंगे या एवेंजर्स की तरह आप अपने आप को लगातार अपडेट करते रहेंगे? एक तरफ आपकी जो छवि है, आप जो बता रहे हैं, बिल्कुल शरीफ नेता। मैंने ये आंकड़े तो सब इस तरफ रख दिए हैं, अब आपसे और कुछ पूछना नहीं है। बस यही था कि कभी आप जब हवाई जहाज से बाहर खिड़की की तरफ देखते होंगे तो कभी आपको अपने बारे में भी कभी लगता है आपको, जब आप सोचते होंगे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भी और ऐसे भी, कि आप कहाँ से होते अब आज आप कहाँ आ गए? विश्व में आपको टॉप 3 नेताओं में आपको गिना जाता है। अलग अलग सर्वेज आपके बारे में आ रहे हैं, इतना सोशल मीडिया पर इतनी ज़बरदस्त आपकी फॉलोइंग है। कभी आपका फिलोसॉफिकल विचार आते हैं कभी आपके मन में? ऐसा है कि मैं बड़ा डिटेच व्यक्ति हूँ, बहुत ही डिटेच हूँ। In February last year in Kashmir, a deadly terrorist attack killed 40 Indian soldiers. This is how the media reacted. Biggest ever attack on our Indian forces in Kashmir. Not condemnation, we want revenge. There has to be a four-front war against Pakistan. Shut them down. No visa, no cricket. The narrative quickly turned into a call for war against Pakistan. हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान के पास आखिर विकल्प क्या है, क्या कर सकता है इंडिया अगर पाकिस्तान से हमें बदला लेना है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब भारत को युद्ध शुरू कर देना चाहिए। युद्ध शुरू हो चुका है। India has struck Pakistan and we have struck them hard. And most importantly, we have struck them straight in the face.
It's not just Kashmir. In June, the government froze state advertising to several newspaper groups, something senior executives at the papers claim was in retaliation to reports they published that criticised the government. Over the past decade, Indians have witnessed the rise of a new breed of news anchor: brash, aggressive, unapologetically nationalistic. They trade in conflict, fear, and spectacle. It's a formula that tends to pay off in the ratings and online. A prime practitioner of this news style is Arnab Goswami of Republic TV. Goswami has an enormous following, particularly among supporters of Prime Minister Narendra Modi's BJP government, and he has plenty of critics who call his coverage of issues pertaining to Indian Muslims partisan and divisive. They say that he's abandoned journalism altogether. Goswami's high-decibel aggressive style has inspired many others, from Rahul Srivastava and Navika Kumar on Times Now, to Amish Devgan of News 18 and Rubika Liaquat on a channel called ABP. The bombing in Kashmir and the way it's been covered could well affect the outcome of the biggest electoral exercise on the planet. Before government can respond, before the army can respond, the media immediately jumps the gun, asking for war. सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान से बदला कैसे लिया जाएगा? India wants Pakistan punished, and like you, I also want Pakistan punished. The coverage on 24-hour news channels has been wall-to-wall, which is editorially defensible, but descends into unjournalistic ranting, especially during prime time. There are anchors calling for war. Studios populated with former generals talking military tactics. हमारे साथ मौजूद आर्मी के 5 जनरल बताएंगे क्या है उनका war plan. Because for the Indian news media, this story ticks so many boxes. Kashmir, Pakistan, the army, and the attack came just as campaigning begins for a national election that is just months away. The competition for viewers has an intensity like nowhere else. Many anchors feel the need to shout louder, more radically, just to be heard, seen, and clicked upon. And as political debate in India has grown more polarized, often over Prime Minister Modi's brand of Hindu nationalism, TV output has grown more debased. When that kind of coverage is fed into the Indian social media messaging machine, the effect can be dangerous. A Pakistani villager is pleading with Indian Prime Minister Narendra Modi to free his pet pigeon, currently in pigeon prison, on charges of spying. How did this happen, you ask? Well, the man lives just a couple of kilometres from the border and let his pigeons out for a fly. Police said the pigeon had a ring on one of his legs that had a code on it they were trying to decipher. But the man says the code is just his phone number. He apparently owns a dozen pigeons and says India needs to stop victimising innocent birds. I think the worst thing is that villagers captured the bird and handed it over to police. And apparently this has happened a number of times over the years. Wow. Here's a picture I got of the pigeon in pigeon prison. In a cage. Oh my Gideon. Excellent. And that's the latest news on BFM. पाकिस्तान में ट्रेंड कबूतर है ये, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है, जिसे इंटरनेशनल बॉर्डर से पकड़ा गया है। इसके बाद इसको पिंजरे में कैद किया जाता है। ये भी बताया जा रहा है कि कबूतर के पास से कूट भाषा वाला एक संदेश मिला है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो पाकिस्तान से इस ओर उड़ के आने के ठीक बाद हीरानगर सेक्टर में मनियारी गांव में इसको पकड़ा गया है। लेकिन जासूसी कैसे कराई जा रही है कबूतर के जरिए, अब ये खुलकर के सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से इस कबूतर को पकड़ा गया है। लगातार पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकतें कर रहा है, कोरोना के संकट में भी बाज नहीं आ रहा है, और हर दिन हम एक नई चालाकी और एक नई तस्वीर पाकिस्तान की देखते हैं। और उसी कड़ी में देखिए आप कबूतर से जासूसी की ये पूरी जो कोशिश है, ये भी Since Modi came to power, there has been an overall rise in attacks against minorities, and it is incredibly depressing to see India heading in this direction, because India, home of this enduring symbol of love, frankly deserves a lot more than this temporary symbol of hate. क्या मोदी जी हैं तो लोकतंत्र खतरे में है? मुझे गुस्सा आता है। मैं
मैं कितनी दफा यहाँ बैठकर आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी कि हिंदुस्तान की मीडिया नहीं रही,